Hello students, myself Hanis Bansal. Today we will continue our topic of class 10 chapter 15.1. In the previous video lecture we have discussed formulas, area of circle, parameter of circle, semicircle and area of ring. And for questions of 15.1, in this video we will discuss further question of 15.1. So students, let's start our topic, and first of all we will discuss our fifth question of 15.1. Fourth question of 15.1 we have discussed in the previous video, and in this video we will discuss direct from question 5th of 15.1. So read the question 5th. What is given in the question 5th? The area of a circular plate is 154 worth centimeter. Given is that area of circular plate 154 square centimeter. Area of circular plate is 154 square centimeter. So find its circumference. It is given that area of circular plate, we know that it is the shape of circular, means circle, and we know that area of circle is given by pi square is equal to 154. By solving this, first of all we will find the value of r radius, then we will find circumference by using 2 pi r. Pi is 22 upon 7, r square 154. So r square is equal to 154. 7 is in divide of r square, so by transport it will be in multiply, and 22 is in multiply r square, so by transport it will be in divide. 22 7 are 154, 7 7 are 49. It is the square, by transport it will be made root 49. Root are positive and negative, but we have find radius, and radius cannot be negative, so we will net negative value and we will get r is equal to 7. स्क्वायर का ट्रांसपोर्ट करने पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएंगे रूट में, बट वी हैव फाइंड रेडियस, सो नेगलेक्ट नेगेटिव वैल्यू एंड वी विल फाइंड दैट रूट ऑफ 49 इज 7 एंड द यूनिट इज स्क्वायर सेंटीमीटर. स्क्वायर सेंटीमीटर मीन दैट बिकॉज इट इज द area, so square centimeter means centimeter square. It is radius, so it is centimeter. It is radius, r is 7 centimeter. Now we will find, according to question, circumference of circular plate, which is 2 pi r. By putting the value 2 multiply pi 22 upon 7 multiply r, radius is 7 centimeter. 7 cancelled by 7, 44 centimeter. So finally we have find that circumference of circle is 44 centimeter. Now students, we will discuss our next question, question number 6. Read the question number 6. Circumference of a circle is equal to parameter of a square. What is given that? Circumference of circle is equal to parameter of square. It is given in the question number 6 that circumference of a circle is equal to the parameter of a square. If area of square is 484 square meter, it is also given that area of square 404 square centimeter. Area of square 484 square centimeter. Area of square is 484 square centimeter. Then find area of circle. In this question given are two values, that first of all circumference of circle is parameter of square. It is a relation between circle and square, that circumference of circle की circumference इतना है parameter of square के,
and given value is only one, that area of square is 484 square centimeter. So first of all we will use this area of square, and we know that area of square is given by side square is 484 square centimeter. It is the area of square. Now we can find side is equal to, it is the square, so by transport it will be made root 484. Root are positive and negative, but it is the sides are always positive, so we will neglect the negative value and we will get root of 484 is 22. It is the side, so unit is centimeter. So we have find that side of square is 22 centimeter. First of all we have find that side of square by given the value of that area of square. Given area of square था, उससे हमने क्या find किया, side of square. Now we will use the relation which is given in the question and solve. Now the given relation is that circumference of circle is parameter of square. Circumference of circle is parameter of square, and we will know that circumference of circle is given by the formula 2 pi r. 2 is fixed, 2 pi is 22/7, and r is the radius of circle. And in this question we have not given radius of circle, so by using this we will find radius of circle. Circle radius हमें नहीं पता, तो इस relation से हम क्या find करने लिए, radius of circle is equal to parameter of square. We will know that parameter of a square is given by 4 multiplied by side. It is given that circumference of circle, and we also know that circumference of a circle is also parameter of circle. It is given that parameter of square, and we know that parameter of square is given by 4 multiplied by side. By putting the value 2 multiply pi 22/7 multiply r is not given, is equal to 4 multiply side of square, because it is the parameter of square, and we have find that side of square in this question is 22 centimeter. 22 cancelled by 22. Now we will solve this and find the value of r. So by solving this we will get that r is equal to 4. 7 is in divide of r, so by transport it will be in multiply, and 2 is in multiply, so by transport it will be in divide. 2 to the 4, 7 to the 14. Unit is centimeter. Now we have find second value in this question, radius of circle. R is 14 centimeter. We have find second value. We have find first value is that side of square by using area of square, and we have find radius of circle by using the relation circumference of circle is equal to parameter of square. Now we will find our question that we have to find that area of circle. And we know that area of circle is given by the formula pi r square, pi 22/7 multiplied by r. Radius is 14 centimeters, square mean multiply by 2 times. 7 to the 14, 22 multiply 14 to the 28. 22 8 the 176, clear is 17. 22 to the 44, 44 plus 17 is 61. It is the area, which is our required answer, that area of circle is 616 centimeters square, because it is the area, so unit is 6 centimeter square. It is the required answer of this question, that area of circle.
First of all, it is given that circumference of circle is equal to parameter of square. It is given a relation between circle and square, that circumference of circle is equal to parameter of square. Now it is also given that area of square is 484 square centimeter. By using this, we know that area of square is given by side square is equal to 484. Solving this, we have found that side of square is equal to 22 centimeter. Now by using the relation circumference of circle is equal to parameter of square, we know that circumference of circle is given by 2 pi r and parameter of square is 4 multiplied side of square. By using this, we will find the value of radius of circle is 14 centimeter. Now we will find, according to question, we have to find that area of circle is pi r square. So by putting the values, we have found that area of circle is 616 centimeters square. Write down, then we will discuss about further questions. Students, now we will discuss next question, question number 7. Read the question number 7. In the question 7 it is given that the cost of fencing of a circular field is 5,280 rupees at the cost of 24 rupees per meter. What is given that? Cost of fencing 5,280 rupees per 24 rupees. Cost of fencing is 5,280 rupees. Or it is given that total cost of fencing, or it is given that rate of fencing is 24 rupees per meter. First of all, it is given that cost of fencing of a circular field is 5,280 rupees at a rate of 24 rupees per meter. given in the question में given है कि हमारे पास ये सर्कुलर फील्ड है, फेंसिंग का मीन इसलिए चार और यहाँ पर कुछ भी हमें तार बंदी वगैरह कुछ भी करना है, हमें इसलिए चारों और तार बंदी करनी है, बाड़ लगानी है, तार बंदी करनी है, कुछ भी इसलिए अराउंड मीन सर्कुलर फील्ड है तो इसलिए चारों तरफ में इसी प्रकार से फेंसिंग करनी है, तार बंदी करनी है। उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है 5,280 रुपीज़, मीन पूरी फेंसिंग करने पर जो कॉस्ट आई, और किस रेट से आई वो रेट क्या उसके 24 रुपीज़ पर मीटर। मीन ये है कि 1 मीटर, मीन यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है तो इस 1 मीटर पर जो कॉस्ट है वो 24, फिर नेक्स्ट 1 मीटर पर 24, फिर नेक्स्ट मीटर पर 24, इसी 24 के हिसाब से टोटल जो कॉस्ट आई वो कितनी आई 5,280 रुपीज़। इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन दैट टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज 5,280 और गिवन इज दैट इन circular field, it is the shape circular field। टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या है 5,280 रुपीज़ और रेट ऑफ फेंसिंग इज 24 रुपीज़ पर मीटर। Unit is meter. We know that if we fencing around circular, it is the, by observing this shape we can say that fencing around, which is the parameter of circle, parameter of a circle. The formula of total cost of fencing is, it is the total cost of fencing, and fencing is around the shape which is the parameter. So parameter of circular field multiply rate, it is the formula of total cost। the formula of total cost जब भी फाइंड करनी हो उसका फॉर्मूला एक तो रहेगा रेट मल्टीप्लाई में। अब फेंसिंग करनी है, फेंसिंग क्या होती है अराउंड होती है, चारों तरफ बाहर होती है, तो इसलिए पैरामीटर। ये कुछ हमें टोटल कॉस्ट इसमें कुछ अंदर कुछ करना होता है यहाँ तो क्या यूज़ करते हैं एरिया, जैसे इसमें अगले पूछ रहा फाइंड करना होगा टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पूछ रहा है तो टोटल कॉस्ट के लिए टोटल के लिए एक तो चाहिए रेट मल्टीप्लाई करना क्या है फेंसिंग, तो फेंसिंग क्या होती है पैरामीटर में अराउंड होती है तो इसलिए पैरामीटर यूज़ किया है। टोटल कॉस्ट कितनी है 5,280 रुपीज़,
parameter of circular field is 2 pi r, multiply rate is 24 rupees per meter, rupees cancelled by rupees 5280, 24 is in multiply, so by transportation divide is equal to 2 pi r. So we have find that circumference या parameter of field 2 pi r. By solving this we can find the radius. 24 to the 48, remainder is 4, 48, 24 to the 48, 0. So we have find that parameter means circumference of a circle is 220 unit is meter. So 2 multiply pi is 22 upon 7 multiply r is not given is equal to 220. So r is 220, 7 is in divide, so by transport it will be in multiply, and 2 and 22 both are in multiply by r, so by transport it will be in divide. 22 1 जा 22, 10, 2 5 जा 10 और 7 5 जा 35. So we have find that radius of field is 35 meter. We have find first value that radius of field 35 meter. Now read the question for again that if the cost of plowing, करना क्या है, प्लॉ करना है, प्लॉ मतलब इस खेत की हमें जुताई करनी है, इसको जोतना है मीन खेत के अंदर जोता जाएगा उसको यहाँ, तो जोतने में प्लॉइंग करने में इसका यूज हो रहा है, इसका यूज हो रहा है, ये जुताई हुई है इसकी, तो ये इस सर्कल फील्ड का क्या है, एरिया है. तो प्लॉइंग करते समय क्या यूज हो रहा है, एरिया यूज हो रहा है. और क्या दिया है, दी रेट ऑफ प्लॉइंग ऑफ फील्ड इज 0.50 रुपीज पर स्क्वायर मीटर. यहाँ रेट दी है, रेट ऑफ प्लॉइंग द फील्ड इज 0.50 रुपीज पर square meter. It is given in the question that rate of plowing the field is 0.50 rupees per square meter. Then find the total cost of plowing. क्या फाइंड करनी है, total cost of plowing. We have to find the total cost. Now by using the concept of total cost, if we want to find total cost, first of all rate multiply. अब यहाँ जो total cost है, here we have to find the total cost of plowing the field, and we know that if we want to plow the field, then we will use area of field. If we want to fence in the field, then we will use parameter of field. Fencing is around the field, तारबंदी जो होती है वो अराउंड होगी, चारों और बाहर होगी, तो पैरामीटर इसलिए. अब यहाँ जो टोटल कॉस्ट है वो किस लिए है, प्लॉ मतलब जुताई करनी है, इसलिए वो कहाँ होगी, अंदर होगी, तो उस लिए यूज होगा एरिया. तो यहाँ यूज करेंगे एरिया ऑफ फील्ड. तो ये टोटल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है. टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल रेट तो चाहिए, और साथ में कॉस्ट है तो इसलिए उस हिसाब से, जैसे यहाँ कॉस्ट फेंसिंग की थी तो फेंसिंग लेना चाहिए पैरामीटर, यहाँ टोटल कॉस्ट तो रेट चाहिए, पर यहाँ कॉस्ट है तो इसलिए प्लॉइंग की, तो प्लॉ के लिए चाहिए था एरिया, तो एरिया यूज़ किया. तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग क्या हो जाए, रेट ऑफ प्लॉइंग इज 0.50 रुपीज per meter square multiply area of field. We know that the field is circular and the area of circle is given by pi r square. So 0.50 rupees per meter square, remove the points and divide by 100, multiply pi is 22 upon 7 multiply r, radius is 35, square mean 35 meter square cancelled by meter square.
50 टू जा 100 और 2 से 11, सो विल दैट 11/7 multiply 35 and remaining is only rupees. 7 5 जा 35, 11 5 जा 55, multiply 35 rupees. Multiply 55 to 35 and we will find the answer of total cost of plowing. Repeat the question that in circular field it is given that cost of fencing is 5280 rupees at the rate of 24 rupees per meter. मीन क्या है, टोटल कॉस्ट दी है फेंसिंग की भी फेंसिंग लरें ले इस फील्ड ले चारों और तारबंदी लरें ले। डायग्राम याद रख लीजिए, जैसे ये फील्ड है चारों और ये इसलिए हम इस प्रकार से फेंसिंग करें। ये फेंसिंग होती है चारों और तार लगाना, इसलिए सिक्योरिटी के लिए, इसलिए बाउंड्री पर तारबंदी कर देना। तो इसमें यह यूज क्या हो रहा है, बाउंड्री मीन पैरामीटर यूज हो रहा है। रेट क्या है 24 रुपीज़ पर मीटर। टोटल कॉस्ट कहीं भी फाइंड करनी, उसका कॉन्सेप्ट ये रहता है टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए एक तो चाहिए होती है रेट, तो रेट है 24 रुपीज़ पर मीटर। एक क्या चाहिए होता है जिस पर टोटल कॉस्ट फाइंड कर रहा है, जैसे इसलिए फाइंड कर रहा है फेंसिंग की, तो फेंसिंग में क्या यूज हो रहा है, पैरामीटर किसला, इस फील्ड का, तो पैरामीटर ऑफ फील्ड जो क्लास है सर्कुलर, तो पैरामीटर का होता है 2πr। इस कॉन्सेप्ट का सोल्यूशन किया हमने पूरा, तो हमें मिली r जो क्या है 35 मीटर है। नाउ वी हैव टू गिवन दैट रेट ऑफ प्लॉ इन द फील्ड। अब फील्ड तो वो प्लॉ कर रहा है, प्लॉ मतलब इसलिए जुताई कर रहा है, इसलिए अंदर हल चला रहा है, इसलिए जुताई कर रहा है। अब वो जुताई जो है वो खेत के अंदर होगी, फील्ड के अंदर होगी, तो वहाँ पर यूज लिया जाएगा एरिया। तो यहाँ से मतलब सर्टिस समझा देना, तो प्लॉइंग के लिए हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए। रेट क्या है 0.50 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। मीन यदि इसमें से पर स्क्वायर मीटर 1 मीटर स्क्वायर का हम प्लॉट करते हैं तो क्या कॉस्ट आती है 0.50। हमें फाइंड करनी है पूरे टोटल, तो टोटल कॉस्ट के लिए कॉन्सेप्ट रेट और मल्टीप्लाई में क्या करना है प्लॉ। प्लॉ के लिए यूज चाहिए एरिया, तो एरिया ऑफ फील्ड इसका यूज किया, तो ये टोटल कॉस्ट आ गई प्लॉइंग के लिए। राइट डाउन, देन वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Students, now we will discuss our next question, question number 8. Read the question number 8, and what is given in the question number 8? Given in the question number 8 is that radius of a circular field of glass. Radius of a circular glass field is 35 meter. Here we are drawing a rough diagram to understand the question easily, that it is a circular glass field. Radius is 35 meter. Glass field. In the question it is given that radius of a circular ग्लास फील्ड मीन सर्कल शेप का एक फील्ड है जिसमें क्या है ग्लास है, ग्लास उगली हुई है और रेडियस लिखी है 35 मीटर। देयर इज ए पाथ अराउंड 7 मीटर विड्थ। देयर इज ए पाथ, यहाँ पर एक पाथ है अराउंड 8। अराउंड इट मतलब होता है बाहर की ओर, अराउंड इन इट, इन लगा हो तो अंदर होता है, डायरेक्ट इट अराउंड इट है तो मीन बाहर है। ए पाथ अराउंड 8 और विड्थ, ये इसकी विड्थ है 7 मीटर। देयर इज ए पाथ, ये पाथ है, देयर इज ए पाथ ऑफ विड्थ 7 मीटर अराउंड 8, इसलिए अराउंड में 7 मीटर विड्थ का एक क्या है पाथ है। इट इज़ गिवन दैट एक सर्कुलर ग्लास फील्ड है, रेडियस 35 मीटर है। देयर इज ए पाथ ऑफ विड्थ 7 मीटर अराउंड इट। अराउंड इट मतलब बाहर है, और अराउंड इन इट, इन मतलब क्या होता है अंदर होता है, तो वो यदि इन इट होता तो वो 7 मीटर का अंदर बन जाता। मेन इन इट होता तो ये ग्लास फील्ड हो जाती 35 मीटर वाली, और जो वो पाथ बनता वो यहाँ बनता अंदर तरफ, ये होता फिर 7 मीटर का पाथ। तो दोनों में इतना डिफरेंस होता है, दोनों में डिफरेंस होता है, इसलिए इसमें जो ग्लास फील्ड है वो छोटा है, इनर सर्किल है, जबकि इसमें जो ग्लास फील्ड है वो आउटर है, बड़ा है। दोनों डिफरेंस है, डायग्राम दिख रहा है आपको दोनों का। इसलिए इसमें ग्लास फील्ड जो है वो अंदर है, रेडियस 35 मीटर उसकी है, छोटी है।
वो जो पाथ वाली है वो बाहर है, बड़ा है। इसमें द्रास फील्ड बाहर है। यदि इन इट होता, इसमें इन इट नहीं है। देयर इज ए पाथ ऑफ 7 मीटर अराउंड इन इट, चारों ओर अंदर की ओर, अंदर की ओर नहीं है तो डायग्राम कौन सा बनेगा, वो बाहर बनेगा। सीधा अराउंड इट है, इसलिए चारों ओर है, मीन वो बाहर है। ये पाथ है, क्या फाइंड करना है, फाइंड एरिया ऑफ पाथ। तो पाथ तो सिर्फ ये है, तो ये एरिया हुआ पाथ का, ये पाथ है, तो इस पाथ का एरिया फाइंड करना है। अब ध्यान से देखते हैं जो फॉर्मूला डिस्कस किए थे इन द प्रीवियस वीडियो। वी हैव डिस्कस्ड 3 टाइप्स ऑफ फॉर्मूला, सर्किल, सेमी सर्किल एंड थर्ड इज रिंग। एरिया बिटवीन 2 concentric circles, it is shape of ring between 2 concentric in which inner circle is glass filled, radius 35। इसमें 2 सर्कल हैं, सेंटर सेम ही है, जो अंदर बना हुआ है, इनर बना हुआ है, वो छोटा द्रास फील्ड का है, रेडियस 35 मीटर है। तो द्रास फील्ड डायग्राम से पता चला कि अंदर है, तो इसको आर आई बता दिया। और विड्थ ऑफ पाथ कितनी है, 7 मीटर। अब हम क्या कर रहे हैं, जो ये आउटर सर्कल है इस तरह फाइंड करने के लिए वी विल फाइंड द रेडियस ऑफ आउटर सर्कल। ये सेंटर, ये रेडियस है आउटर वाली, ध्यान से देख लें, ये जो बनाई है लाइंस, ये है रेडियस आउटर की। तो कैसे आए लिए रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, रेडियस ऑफ क्या है, आउटर सर्कल है। तो ये रेडियस ऑफ आउटर सर्कल किस प्रकार से हम फाइंड करेंगे। तो रेडियस ऑफ आउटर सर्कल कैसे आएगी, देखिए यहाँ से यहाँ तक कितनी है 35 और ये कितनी है 7, कितनी होगी 35 प्लस 7 और 35 प्लस 7 मतलब आर इनर प्लस विड्थ, और ये आउटर की है तो क्या बनेगा आर आउटर। तो यहाँ से एक रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया, आर आउटर इज इक्वल टू आर इनर प्लस विड्थ। तो आर आउटर की वैल्यू क्या आ गई 35 प्लस 7। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फाइंड द रेडियस ऑफ आउटर सर्कल 42 मीटर। इट इज रेडियस ऑफ आउटर सर्कल और इट इज ए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, R outer is equal to R inner plus width, or here we can say that R outer minus R inner is equal to width. Mean width हमेशा क्या होती है outer minus inner. We have discussed this type of formula in our class 9th that it is R outer. Here these are two shapes. It is R outer and it is R inner. R outer is 42, suppose that, and R inner is 35. R outer minus R inner, 42 minus 35, which is 7, which is width. It is the relation between R outer, inner and width. R outer minus R inner is width, and R inner plus width is R outer. R outer minus width is R inner. So R outer minus R inner is width. This will be used in lightly rectangular, sorry square, because square are same in all sides. Outer side minus inner side is double of width, तो डबल आ जाएगी, ये भी और ये डबल आ जाएगी, तो उसमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो वो अपने 9th में डिस्कस किया हुआ है, वी हैव डिस्कस इन 9th क्लास। हियर वी विल डिस्कस ओनली ऑन अबाउट रिंग। It is the outer. Now we have to find area of path. The path is the shape of ring. Area between two concentric circles. डायग्राम आपने नोट कर लिया है, वहाँ से इस प्रकार से बना, ये सर्कुलर ग्लास फील्ड था, ये पाथ बन गया। सर्कुलर ग्लास फील्ड में जो आर इनर थी वो 35 मीटर बनी, ये पाथ है रेडियस 7 मीटर है, और यहाँ से ये जो आउटर बनी ये आर आउटर कितनी बनी 42 मीटर बनी। चेक हो गया पूरा। तो एरिया ऑफ पाथ क्या हो गया, पाथ का एरिया ये वाला एरिया, इट इज़ द एरिया ऑफ पाथ विच इज नाउन एज रिंग बिटवीन टू concentric सर्कल्स विच इज गिवन बाय
area of outer circle minus area of inner circle. Area of circle is pi r square outer or inner pi r square inner. If we want to solve this, then we can use the step that pi is common, outer square minus inner square. Pi, here we can use a identity, a square minus b square. A square minus b square is a minus b, a plus b. By putting the value with that 22 upon 7, our outer is 42 minus r inner is 35. R outer 45 plus r inner, r outer 42 or r inner 35. So we will get that 22 upon 7 multiply 42 minus 35, 7, 42 plus 35, 7 or 4 3, 7, 77. 7 cancelled by 7, and we will get that 22 multiply 77. It is area. If we will multiply 22 to 27, we will get that 1694. It is our required answer, that area of path. Unit is meter, so we will get area of path is 1694 meter square. Students, so we will discuss fourth question, question number 5, 6, 7 and 8 in this video of chapter 15.1. Similarly, you can solve the question number 9 and 10, which is depend upon basis on the question number 8. Question number 9 and 10 you will solve self, because question number 9 and 10 basis upon the question number 8 by using the same concept of area of ring. So students, our chapter 15.1 has been completed, and we have discussed formulas, area and circumference of circle, semicircle, ring, and 8 question of 15.1 in 2 videos, part 1 and part 2. I hope that you may understand all the concepts and examples. If you have any doubt, then you can ask your doubts by WhatsApp or mailing letter or comment in the comment section. Also students, please like and share the video and subscribe our YouTube channel. Also students, goodbye.